Revelio. If someone says you have $13. Good morning, big streamer. अरे घंटा बस बस ठीक है बस बस मेरे को ये करना है इतना यार एक तो ये प्लस माइनस करके मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह प्लस माइनस करना पड़ रहा है ओ इसकी वो है चाबी 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 Every time I'm Oh dear. Incendio. सुबह सुबह कौन करता है यार प्लस माइनस बैंक कर बैठ के प्लस माइनस करना पड़ रहा है Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to... Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. ले भाई चला ही है अंदर जाना पड़ेगा क्या इसके लिए Revelio.
Revelio. Accio. पता नहीं कितने कितने मिल गए मुझे। यार मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई। Revelio. 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 डेमी गाइस वाला भी मेरा वो नहीं हुआ है अनलॉक। Revelio. 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 That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Lumos.
हेलो सौरभ जी, कैसे हो? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. ओह 300 दिए भाई इसने, क्या बात है। तो चाहिए ही थे भाई मुझे। ना ना ना, वो करते हैं डैंडी ले कीज वाला करते हैं, ठीक है। कीज वाला करेंगे, रुको। थोड़ी है बहुत। उतने ही इंसान बोर होने लगता है। Revelio. वे ये कब खुलेगा? मजा तो उसमें आएगा, वो खुल ही नहीं रहा अभी। यहाँ पे नहीं, यहाँ का वाला तो कर दिया है हमने शायद। बेल्ट और इसमें जाएंगे हम। तो जो है ना अंदर की वो नहीं है, क्या कहते हैं, अनलॉक। प्लेयर स्लॉट फुल हो गया। Revelio. Incendio. Revelio. ले भाई, ये तो खुला ही नहीं है। ये कहाँ का है?
वाह बेटे Revelio. ओ यहाँ का म्यूजिक भयंकर जो उसमें आते रहते रील्स में Revelio. अरे दादा मैं सोच रही म्यूजिक कहाँ गया पहले तो ये कैपेसिटी Excellent. अभी आया जस्ट मंदिर से हेलो स्पेक्ट्रल गेमिंग हेलो शंकर शिवरे क्या हाल है बढ़िया हाल है यार एकदम बढ़िया बताओ क्या हाल है Never forget what. बढ़िया सही है वेट करना पड़ेगा Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight ये game ही respite समझ नहीं from आता है। battling the odd troll, I should think. हैरी पॉटर फैन नहीं होना Asked Poppy इसीलिए if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. देखी Meet me है, back here if you भाई, find भाई, anything. क्या देखा तुमने फिर ओह ये कहाँ है भाई ये Revelio.
अरे भाई नीचे है ये नीचे. Off on another adventure, are we? First landmark. कहाँ है? Revelio. यही तो था शायद. इसमें मेरे को मैप तो दिखाओ. This doesn't have now. If I could remember where it is. ये तो मिल गया है मुझे. तो यहाँ पे क्या करना है? View. ये वाला नहीं है, ये दूसरा है. और एक ये पेंटिंग है जिसमें पता नहीं क्या बना है. कुछ तो बना है. ये कौन है? Revelio. ये तो इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा है. नीचे कहाँ से जाते हैं What are you यार? up to now? नीचे कहाँ से जाते हैं? Yeah. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. ठीक है. यहाँ find the अभी दूसरा वाला लैंडमार्क है. ये है क्या? There's the fountain. I'm getting closer. This stairwell looks promising. रुक जा, रुक जा. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? क्या रुक गई? Yes. Revelio. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. My mind. I wonder what came of Arthur's search. कपड़े मिले उसको. Revelio. जैसा मिला भी नहीं जो Accio. काम का हो Lumos. सारे. यहाँ पे तो नहीं है वो.
जो मैं ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है? पागलों की तरह भाई डोरा द एक्सप्लोरर बन जाते हैं इस गेम में। क्या तुम्हें खजाना दिख रहा है? हाँ मुझे खजाना दिख रहा है। अरे ये क्या टाइमिंग है? उल्ले भाई, मेरा तो ये सेव भी नहीं हुआ जो मैंने किया था। अल्लाह भाई। This stairwell looks promising. Almost fainted trying to hug. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Pa-pa-da-pa-pa-da-pa. Now. What's the point of toiling if it can be done with magic? Repair 'em. अबे भाई रे ट्रेसिंग अच्छा नहीं है। तो fuck। Not a day goes by I don't use something like this. Revelio. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise.
I was going to try out for the Quidditch team this year. Revelio. I'm trying to grow some asphodel. My mother was shocked the first time. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Someone sent me an owl. That is not on you now. Whoever decided to make some metal black headmaster of Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Revelio. Obviously, that's when everything changed. 5 or 3? क्या बात है स्ट्रीमर? हाँ भाई, जिंदा हो गए तुम? Revelio. ये बढ़िया है। अभी ना हमको ना बताए वो है ना जो क्या कहते हैं अभी जैसे तैसे ना बिना उसको जीतना पड़ेगा। ये जीतना पड़ेगा। हेलो राणा सर, कैसे हो? हेलो हरमाइनी, हाउ आर यू? हेलो राणा सर, कैसे हो? Black, no, got one.
ये घोस्ट ऑफ लव क्या है वो देखते हैं पहले तो। ये कहाँ पे है? बाहर है शायद, बाहर है। हम जिंदा हैं। विकार्डी ओब्लिवियसा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है राणा सर। नो स्ट्रेस, ओनली फन। नो स्ट्रेस, नो लड़ाई, नो झगड़ा, सब एकदम मस्त अपने में लगे रहो। उनको यहाँ जाना है, यहाँ। ठीक है, और वो है ग्लैड। यस, मस्त एकदम। ओ, हमको रात चाहिए इसके लिए। रात करवाते हैं, भी करवाएंगे रात। Revelio. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Revelio. ओ, अब उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तैसे उसको जीतना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे, बट जीतना पड़ेगा। हम पे तो वो भी नहीं है इतनी, क्या कहते हैं, चाम, बट जीतना पड़ेगा यार। एक्सपेलियार्म्स लगा देते हैं, एक्सपेलियार्म्स, और इसमें लगाएंगे हम विंगारियम लेवियोसा। लेवियोसा। Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Look who's back. Ready to...
I certainly am. वैसे तो हारेंगे पक्का, बट हम एक लड़की को ले लेते हैं. चलो. Yes, Natty. Then let's get started. गर्ल पावर क्या पता जीत जाए. We can make this a real victory. That's the spirit. अरे यार मेरे को समझ आ गया हम हार क्यों रहे पता है क्योंकि हमारे पास वो नहीं है क्या कहते हैं हेल्थ नहीं हम पे समझ रहे हो हेल्थ वाला पोशन बनाते हैं ये तो खरीद के आते हैं Yes, I'm ready now. नहीं होता अरे यार फिर से चालू हो गया तो वही बात हुई कि हारने के लिए Is that all you've got? Act like a winner. Ringo! हमको एक बार वो लेना पड़ेगा पता है हम पे स्पेल्स भी नहीं है हम पे स्पेल्स भी नहीं है और हम पे वो भी नहीं है हेल्थ भी नहीं है हे भगवान Care to try again? नहीं No, I don't think so. रुक जा तू मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी मैं रुक जा तू सामान खरीद के आती हूँ आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है गाइस ये आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है हमको वो चाहिए होगा स्पेल्स चाहिए हमें Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. नाम हमें की चाहिए अंकल A wise decision. Thank you. फोकस पोजीशन ये और मैक्सिमा है ठीक है A wise decision. Thank you. वैसे मुझे ये बेचना है आपको ये ले लो Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. भी अपने पे सामान है हम चलते हैं यहाँ वर्ल्ड मैप Cost us our ransom. We had that murder woman who you stayed up with. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. तुमसे I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath.
When you find Literally it, say Evanes पर intramuros पहले I think it's Gryffindor से Latin. complete हो चुके. or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? समझ रहे हो? मन नहीं भरा मेरा. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very दोबारा helpful. हाँ. Thank you. वो तो मैक्स आउट हो गया फिर मैं क्या करूं उसमें घर थोड़ी खेलूंगी. मैंने उसमें ग्राइंड भी नहीं किया था कुछ. घर भी नहीं बना पाई ढंग से. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. क्यों बज रहा है? बज क्यों रहा है? हाँ गेम तो अच्छी है भाई. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. यार बट मेरे पे इतने वो नहीं है तो मैं कैसे लड़ूं? Just as Jackdaw described. Intramuros. मेरे पास चीजें नहीं है यार. मतलब मेरे पे वो नहीं है. स्पेल्स नहीं है. पता नहीं मैंने शायद हार्ड मोड कर दिया है चालू. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. सामान नहीं दिया इन्होंने. हीलिंग ही दे देते भाई. Incendio! I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. I'm not going to touch those. Ugh. Leviosa! Leviosa! Incendio! Take it!
ओ भाई ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मेरी तो बैंड बजी है। पहली If I could summon that platform to me, I could likely get on it. लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down there.
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Where could he be? There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Tego! Spellcrafts incendio! Oh my my. इसने तो मेरी बैंड ही बजा दी. अब बजेगी बैंड लो. अब तो मैं डेड हूँ. मेरे पे तो वो भी नहीं है हील. वो डेड है. डेड सीन है. डेड सीन. हील खरीद नहीं सकते. हील बना नहीं सकते. भयंकर क्या करना है. सर फोड़े अपना. जी भी है भाई. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Shame you're so foul. What the fuck? ये क्या था? ये क्या था भाई? कहाँ से कौन आ? पता भी नहीं चला. Very bad, very bad. There it रुको. is. कुछ है हमारे पास ऐसा जिसको पहन के हम ताकतवर बन जाएं. ये ले लेते हैं. इसमें तो मैंने और इसमें कुछ होगा. भाई ये क्यों पहन रखा है हमने जब इसमें ये लगा है. इसमें डिफेंस इसका 30 है ना बस. Bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Tego! Spellcrafts incendio! Not my fault you're a deadly great spider. ये क्या है?
अबे भाई मुश्किल है भाई, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाई। ये तो मेरी बैंड ही बजा दे रहे हैं। Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. भाई 0 HP हुआ है। The fuck? कुछ भी। Revelia. डेड सीन है भाई, मेरा डेड सीन है भाई, मुझे कुछ दो भाई, ऐसे नहीं होता। खत्म हूँ मैं, खत्म। Must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? यार Protego! Incendio! Leviosa! अभी कैसे होगा, अभी कैसे होगा, बिना स्पेल्स के कैसे होगा। मतलब कहता है पूरा 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 पहले करो, स्पेल्स वेल्स कुछ करो, ग्राइंड मारो गाइस, ग्राइंड इज इम्पोर्टेंट। मुश्किल है, मुश्किल है Leviosa! Incendio! Protego! Incendio! Leviosa! Leviosa! Incendio! Expelliarmus! Revelia! 0 HP से थोड़ी कर पाएंगे हम। Protego! Expelliarmus! Incendio! अबे ले, अब तो बड़े बड़े आ गए। Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Incendio!
भाई 0 HP क्लच कर रहे हैं भाई, हम पागल हो गए हम. That's unnerving. What's happening? हम हो गए पागल. I've seen this before. क्या हो गए हम पागल? In Gringotts and the restricted section. Full HP हो रही है तो मार नहीं पा रहे और 0 HP पे मार रहे हैं हम, पागल हो गए हम. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? मर्लिन ट्रायल्स हमने कर दिया एक. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Incendio! I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away.
Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Depulso. Revelio. Revelio. Depulso सीखनी है गाइस हमें. Depulso. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up, firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. It'll take some getting I used want to. them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we?
This next set of rings will take you around the grounds for more of a... What a view! Hello! Nice day for a flight! Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. तारीफ भी कर रही है और punishment भी Sorry दे about रही है. that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite.
I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Isn't Sebastian Sallow's family from Do you Fel- realise what you're wearing? I would have expected him to be from some... मैंने क्या पहन के घूम रही हूँ मैं like literally I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. कॉन्फ्रिंगो सीखेंगे भाई अब आएगा ना कुछ मजा Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. What is? No. Have you finished your herbology essay? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. अरे यार मैं ना पता है बहुत थक गई थी मैंने ना बैक की थी और उससे पहले मैंने लेग्स की थी तो मेरा जो लेग्स है ना बहुत दर्द हो रहे थे बहुत क्या ही बताऊं मैं क्या क्या दर्द हो रहा था वो भी नहीं बता सकती मैं How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous.
about this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted me since the day... Revelio. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it? Confringo! Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can.
Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's मजा power. आया फिर Are जिम you करके telling me yes, that goblins बहुत may मजा be आया। wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. नाइट बोर्ड पे 1 मिनट है, मेरा नाइट बोर्ड है जो रुको इसकी जो कमांड्स है, इसकी कमांड में एक कमांड है जो कि मेरे को चेंज करनी है। ये है हाँ ना तो करना है, जाना है यहाँ से। बाय बाय। मैं 2 साल पहले करता था ना, फिर कुछ दिन बाद बोर हो गया, कोई दोस्त नहीं था जिम में, तो फिर बंद कर दिया जिम। I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. ये तो कुछ सही हो गया। तो गुस्से में ही रहता है भाई ये। डांस वांस कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है यार। हाँ प्रेम हेलो पोल्टर गाइस, कैसे हो पोल्टर? कैसन बा? ठीक बा? 1 मिनट है, एक काम कर रही हूँ। चल रही है स्ट्रीम? हाँ चल रही है। उसमें क्या है? कॉल आ गया था भाई। कॉल नहीं आ सकता मेरे को? बताओ, कुछ काम नहीं हो सकता मुझे? ना नल्ली नल्ला थोड़ी हूँ। मेरी भी फैमिली है भाई। कॉल वॉल करती है, परेशान करती है मुझे, ये करो वो करो। मेरी भी फैमिली है। ठीक बा। Galleons and a historian's uniform. One boy fell off his broom. सबसे ज्यादा परेशान मुझे मेरी मम्मी करती है। उससे ज्यादा मेरे को कोई परेशान कर ही नहीं सकता है। मेरी मम्मी 0 सेकंड की मिस कॉल मारती है, फिर बोलती है कॉल नहीं उठाया।
कॉल भी आता है तुम्हें, और मिला के 5 कांटेक्ट है मेरे, ठीक है? Professor Weasley? तो 5 व्हाट्सएप पे भी है और 5 मेरे फोन पे भी है। Somewhere ठीक है, away from बहुत prying eyes. busy हूँ मैं। चलो हमें रूम ऑफ रिक्वायरमेंट तो मिल रहा है। हाँ वाह, अभी ये इन्फेक्शन ठीक है? हाँ ठीक। Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Damn, 5 crazy Shall यार। we? एक After टाइम you, था जब Professor. 5000 थे। फोन को पता नहीं क्या बना रखा था, फेसबुक। बीटेक के टाइम पे सीधे कट ऑफ किया सबको, कच खच खच खच। सिम ही चेंज कर दिया और फोन भी चेंज कर दिया। मेरी क्लास में ही 100 बच्चे थे, बताओ। बीटेक में पूरा मिला के 5000 बच्चे थे और मेरी क्लास में ही 100 बच्चे थे। सीएस में सबसे What ज्यादा is थे। this place? मेरे को उसी This समय समझ is जाना the चाहिए था कि room मुझे भी of सीएस लेनी requirement. चाहिए। It only appears when one is in वैलो real क्यों need नहीं of हो it. रहा है फिर? बैन पड़ गया था। Ordinarily, a student might लाइट चली stumble गई upon this थी। room entirely बैन by पड़ गया था accident. 3 दिन। If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. कांटेक्ट पगलू, While अरे I'm नहीं here, we यार, should take advantage of the moment. उस समय ना where ये is नहीं Deek? था, क्या कहते हैं, You must have sneaked past व्हाट्सएप and था gone ahead. सिर्फ, फेसबुक। Professor? The house elf I was speaking Instagram to नहीं in my था ना? classroom your first day. Thought he might help you use हाँ, the अभी तो room मेरा नहीं once था। you found it. मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम। There's no chance I'm clambering over हंसो this मत, ठीक है mess. पोल्टर? मेरी लाइट चली गई थी और फिर मेरे पास कोई This भी नहीं था presents जो the लॉगिन करे, perfect और फिर मेरे को opportunity बैन to पड़ गया teach you 3 दिन का लगातार। Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things. अभी here in भी the लाइट room. जा सकती है, तो I इसलिए मैं नहीं suggest you खेल रही हूँ अभी। practice the wand फिर movements बैन पड़ first, जाएगा। then you can clear the chairs away. थोड़ी देर में खेलते हैं, 2 बजे लाइट नहीं जाएगी। तब सीधी सादी हो गया। हाँ, Splendid. Now, जैसे टीचर cast वीचर का Evanesco कांटेक्ट on those chairs. व्हाट्सएप पे ही चलता था सब। मैं तो फेसबुक भी यूज नहीं करती थी। मेरा फेसबुक भी नहीं था। Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. कल एक बार लाइट गई और 30 आवर्स के लिए कूल डाउन लग गया था। अबे भाई, मेरे को 3 दिन का लगा है। मेरा तो दिमाग का वो हो गया था। Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. दिमाग का भरोसा हो गया था मेरा। हाँ, नहीं तो फालतू में। Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! भाई, एक तो एक आईफोन के अपडेट ने मेरा दिमाग का भोसड़ा कर रखा है। नया लाइक उसको अपडेट करो, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, टच काम ही नहीं करता है आईफोन का। फिर उसके बाद लगे पड़े रहो, उसे रीस्टार्ट करो, फोर्स रीस्टार्ट। वाओ, कितना सुंदर है बॉय।
मुझे कभी नहीं पड़ा वैन, तुम्हारी लाइट नहीं जाती ना, हमारे यहाँ बहुत पावर कट होता है भाई, इतना पावर कट होता है कि उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसे, इन्वर्टर वगैरह का। How does anyone other than a house elf manage to get around in here? बार बार पावर कट ही होता रहता है। पैसे किस चीज के लेते हैं पैसे भाई? पिछली बार पता है कितना फाइन दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगाया, ठीक है, हम लोगों ने स्मार्ट मीटर हमने नहीं लगाया, उन्होंने खुद ही लगाया। पुराना मीटर हटा के स्मार्ट मीटर लगाया, ठीक है। What was that? पता है कितना फाइन, कितना आया था बिल? 6400। Perhaps you should summon your wits and find out. और जब लाइट ही नहीं रहती तो फाइन किस बात का है, मेरे को तो ये जानना है सबसे पहले। लाइट भी तो होनी चाहिए ना, फाइन वो क्या कहते हैं, इतना बिल देने के लिए। लाइट ही नहीं रहती है तो किस चीज का पैसा ले रहे हो तुम? I hope that house elf can find us in here. मैं खेलता ही नहीं तो बैन कैसे पड़, ये भगवान। ये सही है तुम्हारा। Yikes! Careful. Huh? देखो हमारा एसी चलाने के बाद भी ना 1200 तक का बिल आता है, ठीक है, चाहे एसी चलाओ चाहे हीटर चलाओ पूरा दिन भर। Hello. 6400। We've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? हमारी फैमिली छोटी है ना, सिर्फ मम्मा पापा और मैं। Deke is honored to meet you. Deke has been a friend पापा since बाहर ही I was रहते a हैं, second फिर भी year. इतना We discovered bill this bang. room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Deke, Professor इसका नाम है Weasley. Deke। The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any फ्लैट में map. रहते हैं, प्राइवेट बंगलो है Most भाई। happen upon it by Flat accident, if ever. Deke's Flat seen students एक और in need जगह of an पे extra है, file वो- for potions stumble upon the room मैं filled नहीं with them. बताऊंगी। You ऊपर है seem to पहाड़ have में एक जगह, accessed it in वहाँ its पे है, form as the flat। Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need हमारा बहुत specifically कम आता है is a उधर place where I में। can catch up on my schoolwork without distraction. मेरे यहाँ पे कम ही आता है the यार। room can provide मीटर you में with पता नहीं क्या। precisely that. Now, स्मार्ट मीटर it's लगाया है कि time पैसे to छापने focus की on what you मशीन। need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. सोलर पैनल लगा लो, बिल बहुत कम आएगा। पहाड़ में हूँ मैं, बारिश होती है इधर तो पता भी लगता है कि गर्मी क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप आने लगी है, वरना मोस्टली ठंडी रहती है। You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. मजेदार फ्लैट कहाँ है? Excellent. प्राइवेट ही होनी चाहिए। It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. पता नहीं क्यों नहीं उठाते कॉल यार, परेशान कर देते हैं यार, कॉल ही नहीं उठाते हैं भयंकर की। सीधा किधर से और उल्टा किधर से पता ही नहीं चल रहा है। अरे नहीं भाई, वो जानबूझ के नहीं उठाते और उनको जितना बोलो ना वो और भी नहीं उठाते फिर। Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. इस दिन मुझे मिल गए ना, मैं बहुत सुना दूँगी गंदा वाला वो भी। चीजें तो हैं मेरे पास अच्छी सी। Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions brewed. मेरे को ये चाहिए, जितना बना सकते हो उतना बना के दे दो। मुझे हीलिंग का चाहिए। तुम्हें वैनिश कर दूंगी मैं। मुझे हीलिंग पोशन चाहिए बहुत सारे।
जितने बन सकते हैं उतने दे दो। I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. भाई 8 मिनट में बनेगा भाई। I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. Maybe First, you'll need to gather some that's why. moonstone. You can They acquire aren't it by picking up the vanishing calls. items Oh, here hello. in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Wall decoration. Good work. Shall we move on? ले भाई ये तो है ही नहीं। ये बनाने का 6 मिनट है यार। I hate it. Oh my god भाई ये I've कौन conjured आ गया everything I can. भाई? What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. Not a good choice. The altering spell I will don't allow want you them. to customize any conjured बस item. quest करना है। You can मैं change the दूसरा colors, लगाऊंगा। patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ले भाई एक और Just aim your wand, conjured item, and perform the altering spell to customize it. वो भयंकर इतना बड़ा भाई ये सही है मुझे अच्छा लग रहा है बट इसे मुझे ब्लैक करना है फिर Nicely done.
Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these three signs on the floor or balcony. ले भाई वो इनके लिए बढ़िया है क्या करना है ओ भाई भाई Oh my. ज्यादा ही लंबा है नहीं मजा आ गया Oh, great. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Ambience. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks he'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. बढ़िया लग रहे ना अब Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. थप्पड़ थप्पड़ कहते थे ये वाला है क्या आप गए थे इतने दिन उससे का ओ हेलो मैं गायब हो सकती तुम नहीं हो सकते ले भाई अपने लिए बड़ा बड़ा कमरा आ गया भाई वो An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. अरे तो इसको हटा देते हैं ठीक है इसको हम हटा देते हैं इसको हम हटाएंगे और इसको हम डालेंगे इधर कहाँ है हमारे बड़े कमरे मैं आया था बट आप नहीं थे जैसे ओ हेलो तो तुम्हारी गलती है तुम्हारी हरकतें ऐसी है
भाई ये सिटिंग एरिया है, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। काश अपने कमरे को भी ऐसे ही बदल सकते हैं, मजा ही आ जाता है जिंदगी में। आपकी हरकत, मेरी हरकतें बहुत अच्छी है, तुम्हारी हरकतें गंदी है, तुम ही गंदे हो इधर, ठीक है, मेरे पे मत बोलो, हेटर कहीं के। ओ ये तो हमें चाहिए भाई, गॉड भाई, ये तो चाहिए हमें। घर घर खेलेंगे भयंकर। और हम यहाँ पे रखेंगे सामान, क्या रखेंगे हम यहाँ पे? सामान जो कि हमारे काम का हो, जैसे कि ये। तो हम ब्लैक कर सकते हैं? अरे यार ब्लैक अच्छा ही नहीं लग रहा है। ग्रीन रखेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। ये और यहाँ पे हमको एक पोशन वाला भी तो चाहिए। कलर कैसे चेंज करते थे? ऐसे ठीक है। फिर मुझे बोले हो मैं गायब, अब तुम ही गायब हो भाई, मेरे को मत बोलो भाई तुम गायब हो। हाँ यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, फिर तुम ही गायब हो, मुझे मत बोलो। इतने तो हम पे वो भी नहीं है चीजें, बट इसका कलर वलर तो चेंज कर ही सकते हैं। ये ले सेट हो गया फर्नीचर। ये चाहिए हमें, ये उगाएंगे इसको। ले भाई उग जा, उग जा, सारी चीजें उगाएंगे। ये वो बना सकते हैं ना हम। भाई हीलिंग चाहिए भाई, जब देखो हीलिंग नहीं होती, जब देखो हीलिंग नहीं होती।
हीलिंग के लिए चाहिए हमें हॉक लम्प जूस, ठीक है, तो ये हम खरीद के लाएंगे, ठीक है। वो ये भी चेंज कर देंगे। बैंकर अभी बन गया, थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, ना कुछ खास नहीं लग रहा है पर ठीक ठीक लग रहा है। समझ रहे हो, ठीक ठीक लग रहा है, ठीक ठीक। कोई स्टैचू है हम पे बड़ा, इसका कलर भी नहीं चेंज होता है। कुछ बड़ा स्टैचू लाएंगे, ठीक है, वो लगाएंगे। ओ हम पे तो ये भी है फाका ब्रो, ये है ना हम पे। अभी देखो तुम, इसको यार ग्रीन कलर का नहीं है क्या? ये रहा ग्रीन, बट ये इतना सुंदर नहीं है। ये लो है, ये तो बंद ही हो जाएगा अगर इतना। और क्या हम पे कारपेट है, और ये फर्नीचर के नाम पे कुछ नहीं है, इसके नाम पे भी कुछ नहीं है, सोफे के नाम पे हम पे कुछ भी नहीं है, पुरानी चीज है। वो थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, वो ठीक है। ये अब टाइम आ गया यहाँ से जाने का, नहीं तो हम इधर ही रह जाएंगे। बजलेश, तुम हो बजलेश, तुम बजलेश। बकवास करते रहते हो, बस बजलेश हो तुम, मेरे को मत बोलो, ठीक है, तुम हो। Revelio. तो ये फर्नीचर तुम खरीद नहीं सकते, तुम्हें ढूंढना पड़ता है। बजलेश तो मैं नहीं हूँ, बजलेश तुम हो। हाँ मेरे को बोल रहे हो, तुम लोग हो। मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम लोग बदलेश हो, मेरे पे थोपते रहते। All of my siblings have gone on to work. मेरा रैप अगर चालू हो गया ना तो चुप नहीं करा पाओगे, बता रही हूँ मैं, कर दूंगी अभी रैप चालू, थक जाओगे। था द मैप चेम्बर, रिपोर्ट टू प्रोफेसर, अबे ये तो कर दिया। डिपल से सीखते हैं, फिर सीखेंगे विंगार्डियम लेवियोसा। एक्वायर एंड यूज अ फोकस पोशन और मैक्सिमा और ले भाई फोकस मैक्सिमा, फोकस नहीं हम पे, लो भाई खरीद हम पे भाई। अबे हट जा भाई यहाँ से, मैंने बजना आपसे ही सीखा है जस्ट सिंह। हाँ ले भाई मेरे से ही सीखा है, फिर भी नहीं बच पाते हो तुम। ला बाप होता है, ठीक है, बापू मैं। Hello there. In the market for potions, are we? पहले मेरे को कुछ खरीदना है, ठीक है, बाद में तेरी मदद करूंगी। मुझे पहले तो ये दे दे। A wise decision. Thank you. और मुझे फोकस पोशन दे, फोकस, हाँ फोकस फोकस फोकस। और अब I चल hope बात to see you again. Farewell for now.
ओ इसको डिलीवरी करवानी है, रुक जाओ। एंड यूज देम साइमल्टेनियसली, ठीक है। फोकस पोशन कहाँ है? फोकस, ये फोकस है। हाँ फोकस भी है। फिर अब है मैक्सिमा पोशन, ये हम ये मैक्सिमा। और उसके बाद हम ये पिएंगे। Excellent. ओ ले, ये पोशन काम के हैं भाई बहुत। क्या क्या ऐसा क्या? अबे भाई मेरे को नहीं पता था इससे पत्थर बन जाते हैं। जो पत्थर तो बनना है मुझे। We have everything a young student might need when it comes to potions. Have अंकल a मुझे good और look देना, around. पेट ने भरा है। और दे दो, फोकस पोशन दे दो, A wise decision. Thank you. मैक्सिमा भी दे दो, और ये भी दे दो भाई। ये बढ़िया है भाई, पत्थर बन जाता है ऐसे। I hope to see you again. 3 Farewell for बॉटल now. खटक ली, और बॉटल खरीद ली। लो, क्या कर लोगे तुम? तुम कर क्या लोगे? मजा आ गया, मजा। अब जाए हम हॉगवर्ट्स। Bum, बम बम। ये क्या है? डम डम डम। ना माने, ना माने। ओ माय गॉड भाई, 100 रुपए का ना माने कर दिया। ए बजलेश हो, ठीक है? थप्पड़ खा जाओगे। थप्पड़, मैं एक थप्पड़ मारूंगी, तुम्हें लगेगा 4 मार दिए। चित, एकदम चित हो जाओगे तुम। चित। I thought she वो did. क्या डायलॉग था? I रुक hope जाओ, you know डायलॉग that याद it है। isn't true. एक पड़ेगा Well, of course you're going to say that. एक पड़ेगा 10। She was only itchy because of a stinging jinx that the other girl put on her. एक मारूंगी 4 लगेंगे, ठीक है? हाँ, डायलॉग की भी माँ बहन हो गई। सौ में से कुछ YouTube लेगा, 30% लेगा YouTube, 30% अपनी जेब में डाल देगा। ले भाई, सेंड 20 गिफ्ट मेंबरशिप। ओ माय गॉड, एयरटेल, क्या बात है भाई। कितना सारा हेलो 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 हो गया भाई। सुशील जी को मिली है क्या? हेलो हाय भाई बहुत लोगों को मिल गई, बहुत लोगों को मिल गई है। Now, was it 2 pinches of angelic बट स्नीति को नहीं मिली। potions when Professor Sharp is अरे W8 थैंक्स फॉर मेंबरशिप। ए भगवान, इसको क्यों देती फ्री की हो? इसको दे दी फ्री की हो।
ये साउंड लगा रहे कि मेंबरशिप पे हेला की साउंड है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। How are your assignments coming along? अरे यार ये बैठ क्यों नहीं रहा है? ये जब तक बैठेगा नहीं ये बात नहीं करेगा। What the fuck? भाई बैठ जाना प्लीज, बैठ जा भाई, बैठ जा प्लीज, बैठ। I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. उसे खुद को भी मिल गई गिफ्ट की भी मेंबरशिप। इसे कहते हैं let किस्मत, your mind ठीक है? wander. किस्मत है ये। You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go. डिपल्सो कहाँ है डिपल्सो? Classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Confringo. क्या देखा आपने? मेरी स्पेल देखी नई वाली। ये देखो, देख रहे हो? अबे तो देख ही नहीं रहा है, देखना। ए भाई देख, इल्लीगल है ये, इल्लीगल स्पेल, समझा? भाई देख ही नहीं रहा है, ये तो बहुत गंदा है भाई ये। माँ कसम इग्नोर ही कर दिया इसने मुझे। पहली बार इग्नोर हुई हूँ। एक एनपीसी से बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो घूस। रेगुलर हो जाओ, ठीक है, डन है। वो पक गया तुमसे पहले ही, ले भाई। Got it. अपनी बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम, है ना? अपनी बात कर रहे हो तुम। ये सब तो बहाने हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम वो बताओ, ठीक है? बहाने मत मारो। 16 ढूंढने ये, और ये है हमको 16 ये ढूंढने। हमें जो है 16 वो ढूंढने भाई। अब तो हम पे डिपल्सो आ गई है, तो शायद हम टैलेंट पॉइंट यूज कर सकते हैं। कोई तो इंसान था जो मुझे बताता था टैलेंट पॉइंट कहाँ यूज कर सकते हैं। अब वो इंसान है नहीं। डिफेंडो सीखना है। 16 करना पड़ेगा। एक तो जिम वाले को क्या बोले? अरे जिम तो जाना पड़ता है यार, नहीं तो मैं मोटी थुल हो जाऊंगी। मोटी लड़की अच्छी लगेगी बताओ? अच्छा लगेगा बताओ? भागती हुई मोटी लड़की, धरती हिल जाएगी धरती। बचपन में मैं बहुत वो थी मोटी। Acquire and use whenever acquire It's hardly worth studying for the potion. ले भाई मैंड्रिक चाहिए अब हमें। भाई ये तो बहुत ही खर्चा कराते हैं। इतना तो ये पैसा भी नहीं देते जितना ये खर्चा करा देते हैं भाई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बचता रहता है। देखो मोटी लड़की फिर बजेगी, कैसा लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? वो वाली कौन सी थी वो? अच्छा, जहाँ पौधे उगते हैं। एक जगहों का नाम ही नहीं रहता मुझे याद। पता नहीं कौन सा जन्म होगा वो, जिस दिन मुझे जन्म याद रहेगा। जगहों के नाम याद रहेंगे। जाओ जाओ जिम, कुछ भी हो, डोंट स्टॉप। अरे
मुझे जगह का नाम ही याद नहीं आ रहा है। बताओ मुझे। जगह का नाम बताओ। जहाँ पे वो पौधे उगाते हैं। तो उस मैम का भी याद नहीं आ रहा है नाम। यहाँ पौधे, अबे यार खरीदना ही पड़ेगा भाई मुझे। कहाँ है? ले, हो ही जाएगा याद कभी तो। दूसरी बार खेल रही हूँ ये गेम, फिर भी याद नहीं है। Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. देख सुन भाई मेरी बात कर, तू बहुत महंगा लगाता है। इतना महंगा है ना तू, माँ कसम इतना महंगा ना कोई है ही नहीं दुनिया में जितना महंगा तू है भाई। मैंड्रेक किसके पास नहीं है? What the I hope to see you again. Farewell for now. को अब वो जगह ढूंढनी पड़ेगी रे। वो ये रही ना, ये हरा हरा दिखता है ना, समझ आ जाता है वही है। वो नहीं, उसका शॉप पे महंगा। महंगा तो बहुत है भाई, पता नहीं कितना महंगा है भाई। महंगा कहीं का, बहुत महंगा लगाता है भाई। मैम कहाँ होगी मेरी मैडम? मैंड्रेक यहाँ तो है ही, दूसरी साइड होंगे शायद। I enjoy having lunch down by the lake. ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई हैं ऊपर नीचे चढ़ने के लिए? ओह माय फकिंग गॉड भाई, कहीं जा नहीं सकते इससे? वो है ना वहाँ, मैं कह रही हूँ ऊपर नीचे चढ़ने के लिए। यहाँ से चढ़ो, वहां से निकलो। किसी से बात भी नहीं कर सकते इधर तो, नहीं तो अबे पानी में गिर गई। Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when... Lumos. आंसू तो मिले। कभी भी कहीं भी गिर जाती। वही तो भाई, पानी में गिर गई। लो, पता भी नहीं था कि वहां पे पानी है और सीधे जाके गिर गई। मुझे क्लास नहीं मिल रही है अपनी। ओ मिल गई भाई, बट यहाँ पे तो वो है ही नहीं जो मेरे को चाहिए। प्रोफेसर मैंड्रेक किधर है? मैंड्रेक चाहिए मुझे। चाय पी रही है तू?
the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. वो सब तो ठीक है, मेरी बात तो सुन ले पूरी। मेरे पास वो नहीं है जो तू सोच रही है, ठीक है? और मेरे को याद नहीं है कि मैं कहाँ पे मैंने देखे थे मैंड्रिन, बट मैंने देखे थे, बट कहाँ? यहाँ देखें एक बार, क्या पता हो, क्या पता। आ गया विंगार्डियम लेवियोसा। It's like a place right out of a storybook. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? भाई इस पे भी मैंड्रिक नहीं है यार। Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. डॉगवीड एंड डेथ कैप, ये कहाँ पे है? डॉगवीड एंड डेथ कैप। बी राइट बैक स्नग, डन है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है। वहां तक जाने के लिए तो हमारे पास अभी झाड़ू नहीं है, हमें झाड़ू चाहिए, झाड़ू खरीदनी पड़ेगी। Historically speaking, there's never been a thing I wonder if they'll ever find that golden snitch. Beetle the Bard is a bit too hairy-hearted for my taste. In the village circle. You certainly made an impression. Where we go? Not enough reflection on the past. Well, Ah, Very new well. face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service.
Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. झाड़ू खरीदने के पैसे तो है नहीं अपने पे 2000 की है बाप रे Nice doing business with you. यार हमें पैसे नहीं है गाइस तो हम कुछ भी खरीद लेते हैं ठीक है थोड़ी देर You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weekes' enthusiasm. एक मिनट Speak with Imelda Reels at Quidditch pitch. अबे भाई Imelda map
तो गर्मी लग रही है यार मुझे। ओ भाई नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ जाना है हमें। Well, I don't find her bold. Oh, if Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the last thing. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. This is rather fun. Brilliant. मुझे लग रहा है मैं टकराने वाली हूँ जैसे। Did it. Made it! Excellent! Success! Brilliant! भाई मेरी उंगलियां टूट गई, पता नहीं कैसे मैंने किया है। That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted, then.
Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? एक मिनट है Thomas Brown is a marvel, I tell you. I was looking for an impossible to find book on werewolves. No need to ask why. And he found a copy for me before the next full moon. यार अपने पे ना मैंड्रेक नहीं है यार मैंड्रेक कहाँ से लाया है एक ही मैंड्रेक चाहिए अपने को I should like to retire to a small family.
bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house call, that's all. Or they did. Now, why would you say that? Galleons and... I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. To think it was beneath us all this time.
This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going.
It's time you learned, Glacius, the freezing spell. भाई फिर खरीदना पड़ेगा सामान। एक तो सारे पैसे सामान खरीदने में चले जाते हैं। हमें चाहिए एक इनविजिबिलिटी पोशन और एक चाहिए थंडर ब्रू और ठीक है। Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need it. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. इसका काम कर लेते हैं। Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. हाँ है फातिमा। फातिमा है हमारी। बहुत दूर है भाई ये। That Pippin should have been here by now. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. Always late, that Pippin. Madame Lawang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. क्या पीना पड़ेगा?
It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Could it be a Merlin trial? Revelio. ये मेरे अलावा जो 3 लोग देख रहे हैं थोड़ा चैट भी कर लो भाई बड़े बोरिंग लोग हैं जो सिर्फ देख क्या पता उन्हें सिर्फ देखना ही पसंद है बात करना नहीं पसंद है इंट्रोवर्ट है मेरे जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार बहुत गर्मी है यार गर्मी में पता है जिम जाना इतना मुश्किल होता है ना बाप रे दिमाग खराब हो जाता है गर्मी में मेरा एक्सरसाइज करना गर्मी में बहुत मुश्किल है भाई फिर भी जाना पड़ता है फिर भी करना पड़ता है मेरे जैसे मैं भी ऐसे चुप चुप के ही देखती हूँ बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इंट्रोवर्ट एक तो जिम से पहले भी ना हो और जिम के बाद भी ना हो अगर ये पैसे ज्यादा देगा तो अच्छी बात है नहीं देगा In the तो मैं market इसकी for बैंड बजा potions, दूंगा। are we? I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. क्या भाई अपने मेहनत के पैसे मांग रही हूँ इसमें मुंह क्या बना रहा है भाई मुंह बना रहा है भाई मेहनत के हैं भाई मेरे तेरी तरफ फ्री के नहीं है A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. जिम से पहले भी नहाते और नहीं तो क्या गर्मी लग रही इतनी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गर्मी एक ही चीज है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो है गर्मी Revelio.
से जाते हुए किसे अच्छा लगता है एग्जैक्टली ये पैसे ही मारते रहते हैं मुझसे वंडर पोर्शन ये है ना ये यहाँ जाएंगे हम Thought you had the photo. किसी की तो मदद करने जा रहे हैं हम The castle must have been quite stately in its time. You're gonna regret coming here. Well, he wasn't looking to snatch it. It's you. Protego! That's and that woman, isn't it? Yes! Expulso! Had enough yet? That's the best. अब हमें जाना है प्रोफेसर के पास इसके पास प्रोफेसर के पास बार बार इसको क्यों दिखाते रहते हैं एपेक्स नहीं खेलते क्या फिर हाँ वो क्या होता है वो क्या होता है वो तो कब का छोड़ रखा है 1-2 साल से छोड़ रखा है प्रीडेटर किया था उसके बाद छोड़ दिया था Guide. I'm most pleased to be included. आईडी पड़ी है मेरे पे मन तो करता है बेच दूं बट उस पे स्किन्स है बहुत सारे दोनों में तो बेचती भी नहीं हूँ जैसे जब खेलना नहीं है तो बट वो पुरानी है यार ओजी स्किन से तो मन नहीं करता बेचने का Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Lunch kiya? Very good. नहीं. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. And that of everyone else. Confringo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoyed a great deal of success as an aura. However,
Success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken. And they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. नहीं अभी थोड़ी देर I में suppose खाऊंगी. being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. एक proper वो है meal जो मैं लेती हूँ. ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लो. As I mentioned earlier, Defendo can be versatile but dangerous. ठीक है. हाँ. यार वो क्वेस्ट कहाँ है? एक और सीखनी है ना. विंगार्डियम सीखनी है. ग्लेशियस सीखनी है भाई मुझे. ग्लेशियस सबसे बढ़िया है भाई वो सबसे बढ़िया. मैंड्रेक नहीं मिल रहा है भाई इसके लिए तो कीज ढूंढ लेते हैं हम. क्या कहते हो? जितनी भी कीज है ना वो ढूंढते हैं. ठीक है सबसे बेस्ट वही रहेगा. मैम मुझे तो आवाज आ रही है जैसे यहाँ पे. ये की आवाज आ रही है पता नहीं क्यों. की यहाँ वाली हमने ढूंढ ली थी और हमें जाना है अब ग्रैंड स्टेयरकेस. चलो ग्रैंड स्टेयरकेस चलते हैं. मैप ग्रैंड स्टेयरकेस में हमको जाना है ग्रैंड स्टेयरकेस टावर. ये लेवियोसा से होगी ना यार.
क्या ढूंढो फिर कीज. Another house token for the house chest. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. What are you up to now? Darling Charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. Confringo! Revelio. A dash of powdered bat spleen, I think.
Revelio. I was destined to be a glorious piece of Quidditch had been captured off me. I was. आई थिंक वो खा रही है या फिर कोई आया होगा या फोन पे बोल रही होगी लगता है। जादूगर में खून करके जादूगर हो गया। आई कैन सी योर रेड टैग वेलो व्हेन फाइनली आई एम हियर माइक म्यूटेड। इधर ही हूँ भाई, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। खो गई थी मैं, खो गए हम कहाँ। इधर ही हूँ मैं यार। ये सब ढूंढ रही हूँ ना, दिमाग का भरोसा हो रहा है। फैकल्टी टावर जाना है पहले तो। कितनी और चाहिए मुझे, मुझे तो पता भी नहीं है कितनी और चाहिए मुझे। Revelio.
काफी है जो हमें मिलेगी नहीं यार अभी, क्योंकि हमारे पास अभी गुस्सा है मुझे। 20 क्या, ये लास्ट दिन में 300 ज्यादा गिफ्टेड में से एक नहीं मिला मेरे को, तो खरीद लो। 30 रुपए की तो है मेरी मेंबरशिप तो इतनी महंगी भी नहीं है यार। 30 रुपए में भी 1 रुपए कम है, 29 रुपीज, ओनली 29 रुपीज। नहीं, पहले तो ये वाला क्वेस्ट करेंगे, इनको पीट के आते हैं। बहुत बोल रहे थे ना ये, इनको पीट के आएंगे हम। गुस्सा कितना करती है ये लड़की, गुस्सा ही आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं। हमें चीजें सिखा ही नहीं रही इतनी जल्दी। गिफ्टेड फील्स गुड। 29 रुपीज तो मांग रही, बस वही तो 29 रुपीज की है मेरी। क्या 10 रुपए कर दूं क्या? बिल्कुल ही खत्म, मतलब वैल्यू ही नहीं है भाई 10 रुपए, मतलब शर्म। किसको पिटना है? तुम्हें पिटना है भाई, तुम्हें। दस रुपए का तो ऑप्शन ही नहीं, जब पता है तो। I wish I'd never told you about my gobstones. चलना, बकवास क्यों करी भाई। लड़की को देख के बहुत खुंदक आती है, इसको तो थप्पड़ मारने का मन होता है। दे थप्पड़ पे थप्पड़। मुझे क्यों पिटा है? मैं उठ गए घंटा। If I'm good. इनको पीट के आते हैं। अब तो हमारे पास वो भी हैं। Hello, Lucan. Is the final? चालू कर भाई, चालू कर। ये लड़का चलेगा मेरे को। We can make this a real victory. रूम ऑफ रिक्वायरमेंट अनलॉक कर दिया क्या? हाँ। अकेला आज घर का काम किया हो, क्या बात है। इतना बड़ा काम कर दिया तुमने। You're better than that! Potato! भाई भाई भाई, इन्होंने तो मेरे को हवा में उड़ा दिया। पता है क्या हो रहा है? मुझे पता चल गया मेरा क्या सीन है। मेरा जो वो है ना, क्या कहते हैं,
I could never duel like Q that. बटन है ना जो Q बटन वो छोटा है. मैंने WASD को बड़ी वाली कीज लगा दी इसमें. हाथ नहीं पहुंच रहा उधर. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. एक mod से And so it room is of my requirement great का honor to size present you 2x with हो this जाता है. simple क्या yet बात है. elegant token of supreme dueling. बकवास मत कर. Thank you. Wonder. बच्चों की बातें नहीं सुनती मैं, समझा? बच्चा कहीं का. हट. बकवास कर रहा है तब से. अब हम टैलेंट बढ़ा सकते हैं. बम्बार्डा. ग्लेशियस सीखना पड़ेगा हमें. ठीक है. मैप नहीं यार, बार बार पे मैप ही खुल जाता है भाई. क्या हो रहा है? मैप खुल रहा है. क्या हो रहा है? मैप खुल रहा है. क्या हो रहा है? मैप खुल रहा है. हर बात पे मैप खुल जाता है. यहाँ जाना है हमें. ठीक है. यहाँ येलो शील्ड तोड़ने के लिए मैंने कॉन्फ्रिंगो. पांचवा तो मेरे को दिख नहीं रहा. अच्छा वो झाड़ियों में है भाई. उड़ते हुए जाएंगे. अरे झाड़ू मिल गया. ये
उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं। महंगा वाला झाड़ू नहीं ले पाया यार, 2000 का है भाई, पैसे ही नहीं है भाई, क्या क्या बेचूं मैं। आओ करण तुम्हें भेज देती हूँ, पैसे तो मिलेंगे। Brilliant. इससे अच्छा तुम्हारा फोन भेज दो। क्यों बेचूं मैं? हेलो, आईफोन थोड़ी बेचूंगी, तुम्हें भेज दूंगी। ले, मैं तो उड़ा भी नहीं रही हूँ, ये उड़ता ही चला जा रहा है। वाह, How did you get on with those tasks? भाई टास्क क्या, बाढ़ में पैसे दे मुझे, चल टास्क करते रहो, पैसे वैसे कुछ दे दे नहीं। ओह कितना सेक्सी है भाई ये। Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. मैं तो कुछ भी भेज दूं, भगवान हूँ मैं। It out into the there you go. Catching them quick. Confringo. Glacius. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning method. ना हो रहा मैजिक, बिल्कुल ना हो रहा है तुमसे, बिल्कुल ना हो रहा है तुमसे। प्रकल्प जी तुमसे तो कुछ भी नहीं होता है, कितने यूजलेस हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो आप, कुछ भी नहीं।
किसी काम के नहीं हो आप, किसी काम के भी नहीं हो। अरे यार, एक तो इसका भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये जो करवाता है। टिपल्सो ये भाई। हाँ भाई बताओ। What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Roland's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? तो पता ही था और? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. यार मेरे को ये पसंद ही नहीं है गेम। क्या ये भयंकर बॉल्स। All in the wrist. जी बॉल नहीं पसंद है। गया नीचे, बच गया, नहीं गया। अरे यार Missed the mark a bit on that one. Akio. Nothing to it. Lucky shot. Akio. तो हम हार ही गए हैं, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा स्कोर कर दिया, हमें फिर से खेलना पड़ेगा। ओ माय भाई इसने फंसा दिया ब्रो। माय गॉड भाई ये चीटिंग है भाई। हट यहाँ से। डेड है। That was one for the ages. Wait, did I win? I won. फिर से खेलना पड़ेगा। रुक चल। I'm game for another round. Grand. You could use the practice. क्या ही स्कोर है भाई। Summoner's Court. The ever-changing game. ये इसने भाई बॉल यहाँ रख दी भाई जानबूझ के। बहुत हरामी है। Try to beat that. Not bad. Not bad. Akio. All in the wrist. कुछ भी भाई कुछ भी। That was one for the ages. Akio. कुछ भी उछल के कहीं भी चली गई भाई, ये लक है, ठीक है। Nothing to it. भाई बहुत मुश्किल है। ओ बाहर, ओ माय गॉड भाई वो बाहर गिर गई भाई। बाहर गिर गई भाई। रुक भाई तेरे से फिर से करेंगे भाई। I'm game for another Grand. तुक्का कहते हैं भाई, तुक्का लास्ट में नहीं लगा तुक्का। The ever-changing game. उसको तो मैं Akio. किस्मत देख रही हूँ बाहर गिर गई। अरे यार मेरे को नहीं खेलना ये गेम, मेरे को नहीं खेलना। Didn't think you were a match for me. Akio. ऐसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई। Try to beat that.
was one for the ages. देखो इसने वहाँ पे फंसा रखी अपनी बॉल भाई कितना चालाक है भाई ओ ले भाई एक गिर गई उसके नीचे वैसे अगर हम थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा Tie game. At least you didn't beat me. टाई हो गया यार भाई टाई हो गया भाई इक्वल स्कोर हो गया भाई रुक जा फिर से I'm game for another round. Grand. You could use the practice. ये पहले मुझे क्यों नहीं देता है Summoner's भाई Court. पहले The मेरे को ever-changing करना है game. भाई तू बॉल फंसाता है वहाँ पे Akio. जानबूझ के करता है हरकतें ये देखो हरकतें All in the wrist. I'll let you have that one. Akio. Nothing to it. That was one for the ages. Akio. Try to beat that. भाई मुश्किल है भाई Lucky shot. Tie game. At least you didn't beat me. Yeah. टाई हो गया भाई रुक जा भाई I'm game for another round. Grand. You could use the हो रही है practice. मेरी टाई कैसे हो रहा है बार-बार Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. All in the wrist. That was one for the ages. Akio. Not bad. Not bad. Akio. Nothing to it. Well done. You beat me. पापा बोलो पापा ठीक है 120 ठीक है Bit of good luck. मजा That's आया all. क्या बोल रहा है ये इसकी भैंस I'm यार not lucky. I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Hair Pro Max keep practicing बोलो नहीं Leander, there's no इसके easy मारूंगी। way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. ये राम बेचारा बुरा भी नहीं माना भाई कैसी सी हूँ मैं
पता लग रहा है कितनी बुरी हूँ मैं। ओ माय गॉड, दुख हो रहा है मुझे, डिप्रेशन दे रहा है मेरे को। भाई तूने तो डिप्रेशन दे दिया मेरे को। बेचारे ने बुरा भी नहीं बना यार। टैलेंट पॉइंट है मेरे पे 0 है भाई। ठीक है, कलेक्शन ओ भाई मीडियम और लार्ज पॉट के लिए चाहिए हमें, समझे? तब जाके हम मैंड्रिक बना सकते हैं। Yeah. Yes, you are very much brutal. Oh, hello. हेलो रोहित जी, कैसे हो? जिंदा हो अब? हाँ हो जिंदा? यार मेरे फैन की बैटरी लो हो गई। जिम में ले जाना है भाई, गर्मी लगती है भाई। यहाँ जाएंगे हम, ठीक है? देखते हैं कितना महंगा लगा रहा है ये पॉट। ना ही इज वे बेटर। इतना मारूंगे चाटा चाटा मारूंगी, चाटा चाटा खाओगे, अब थप्पड़ खाओगे, थप्पड़। पहाड़ी पालक बेच रहे भाई अंकल। Take your पहाड़ी time पालक looking क्या होता है about. भाई? Plenty of wonderful books to stoke a curious mind. बस like कुछ को भी, किसी भी चीज को ना पहाड़ी बोल देंगे तो बेचेंगे उसे डबल दाम पे। अरे डिपल्सो क्यों लगा दी? अबे यार मैं डिपल्सो लगा दी। हेलो अंकल। अंकल आप बहुत महंगे हो, मुझे पता है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही महंगा है भाई, ये तो आते ही महंगा है। मीडियम वाला कितने में दे रहा है ये? 1500। थोड़ी सी शर्म आती है, लज्जा। लज्जा पता है क्या होता है अंकल? लज्जा कर लेनी चाहिए कभी कभी, ठीक है? कभी कभी Let me कर know if लेनी there's चाहिए। anything else I can do to help. महंगा कहीं का। इतना महंगा है भाई। रात को आया करो तुम। अच्छा मैं रात को आऊंगी, चलो जिम के बाद आज रात को आऊंगी मैं, ठीक है? अगर तुम नहीं हुए तब मैं तुम्हें बताऊंगी फिर, ठीक? सॉरी। फिर तुम तैयार रहना। ले भाई पहाड़ी पाला केवल चाहिए तुम्हें पहाड़ी पाला। हमारी अपनी खुद की शॉप होगी ना जब गई, तब जाके कुछ कमा पाएंगे हम। तब तक हम भीख मांगेंगे, ऐसे ही भिखारियों जैसे घूमेंगे हम। कहाँ है? मुझे तो यही दिखा था बॉक्स। ये रहा। 500 इससे मिल गए। ऐसे हमें ओ एक यहाँ पे भी है। 500 इससे मिल जाएंगे हमको, ठीक है? नहीं इससे नहीं मिलेंगे।
मैंने सोचा वो वाला है। कट गया हमारा। कटा तो मेरा भी था। कोई बात नहीं, जो काटेगा उसका भी कटेगा। ऐसा लग रहा है मैं गरीब हो चुकी हूँ। पैसे पैसे के लिए तरह से गाइस, हम कितने गरीब हैं हम। ये यहाँ कैसे जाना है? I told you not to go down that path. Miss Peck from Broom Pet. देखो 1000 तो हमें मिल गए हैं, ठीक है? 1000 तो हमने कमा लिया ऐसे। No trouble. Very sorry, Father. Only she said I might burn it. ले 1500 हो गएगा इस 15। अब हम खरीदेंगे उससे Never mind, I'll... महंगे इंसान से महंगी चीज। Those that go to Azkaban. भाई महंगे अंकल, हेलो। I was wondering when I'd see you again. देखो मेरे को आपको देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं। मैं क्या करूं? आप मेरे को काम की चीज दे सकते हो, इसीलिए मैं चुप। पॉटिंग टेबल विद 2 मीडियम पॉट्स। टेबल विद मीडियम पॉट्स। अच्छा इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। अच्छा 3 क्या है? 3 और ये इसमें भी 2 है, ठीक है। 2 1 है। भाई ये सारी चीजें चाहिए हमें। बहुत महंगे हो आप अंकल, बहुत महंगे हो यार आप, बहुत ही महंगे हो। Nothing like finding just the right thing, is there? इतने महंगे तो। Let me know if there's anything else I can do to help. बात तुम्हें आती है? बिल्कुल नहीं आती है। बाय बाय। आओ आओ खाना खाओ। भाई खाने का नाम मतलब भूख लग जाएगी, माँ कसम बता रही है। I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. Arresto Momentum. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. खाना ठूसने, भाई खाने की बात मत करो मेरे को, मैंने भी कुछ नहीं खाया। खाना खाने जाऊंगी अभी मैं, बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, थाली फेंक दूंगी। Dig things. You should be proud of all the potions. Big. देखो पोशन वाला नहीं यार, ये क्या? हाँ ये चाहिए मुझे। ग्रीन कलर का, ठीक है। ये तो उसको हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसको हटाना पड़ेगा।
ये ले लेते हैं हम। बड़ा प्लांटर चाहिए हमें, स्मॉल का हम क्या करें अब। छोटी मोटी चीजें यूज नहीं करते हम। बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। चलो मैं अब जा रही हूँ जिम का टाइम हो गया, नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद जिम जाऊंगी, फिर जिम से आऊंगी, फिर पक्का आऊंगी, ठीक है? इस पर पक्का आ जाना। Deke hasn't seen this many plants before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
I think rules against beasts in the dormitories should be enforced, just because it was a puff scheme. I did 26 hours of homework last week. Let me guess. Catching up on history of magic. Galleons
There we go. Off on another adventure. Wonder who lives here. That's it. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented... What is... Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. You're right. The world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. What do you have for sale? You can always come back when you have enough money. I didn't think I'd be the one doing the buying.
You won't be disappointed, I can promise you that. You'll enjoy your time in Irondale. Shame about porridge. Fascinating, truly fascinating. Wish I had the energy. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What do you have for sale? Glad you were able to stop by. Welcome back. Have you finished your... Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Very good. Practicing your new spell. That's it. Keep it up.
आ गई देखो, आ गई जिम से। आ गई भाई मैं आज, ठीक है, आ गई मैं। मेरे को घूस दी गई थी तो मैं आ गई। अगर मुझे घूस नहीं दी होती तो मैं बिल्कुल नहीं आती। मैंड्रेक और नाम टेंटकुला। हाँ? ओ माय गॉड, ये किसको लाइव देख लिया? एम आई ड्रीमिंग? हेलो स्मोकी। नो ड्रीमिंग। हाँ? ये क्या था भाई? भाई बहुत क्रेजी सीन है भाई। मकड़ियों से नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना मकड़ियों से। मैं जाऊंगी उनके पास। क्या मुझे मैंड्रेक भी मिला क्या वापस? काश मुझे मैंड्रेक भी वापस मिला हो। डैमेज या फ्रोजन एनिमी। यहाँ पे कौन है लड़ने को? Ah, there you are. Potato. वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मुझे कुछ पैसा मिल सकता है गाइस? Tell you this. Hogwarts is lucky. How do you like being hunted? I can even admit production. Manager. ओ भाई, मेरी शील्ड को तोड़ रहे हैं ये तो, बट मजा आया।
पीछे से मारता है भाई, अजीब ही भाई। यार मैंड्रेक चाहिए भाई, कितने मैंड्रेक चाहिए मेरे को? माँ की आंख भाई, सच्ची बता रही हूँ, माँ की आंख। पैसे छापने की मशीन बनानी है हमको, पैसे छापने हैं तो हमको पहले पैसे छापने के लिए हॉगवर्ट्स में लोगों के काम करने पड़ेंगे। इसका काम करते हैं, रुक जाओ, ये पैसे देना चाहिए। वो ये माँ की आंख कहाँ से आई? गेम के बीच में आ गई, आ गई। माँ की आंख हर जगह होती है, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते वहां भी होती है, क्योंकि वो माँ है। I never thought Ramrock's loyalists would... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. My paintings. कान तो हमेशा ही रहते हैं भाई। I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Past the ruins. I'm on the right track. An encampment. This must be... looks as if there's more. पिंड मैसेज रिमूव करो, अब करते हैं यार। We should have killed that traitor arm when we took his cards. What was that? Oh, here's a... Who's there? Someone there? जिसको मार रही है उसको लग ही नहीं रहा है। How many of you are there? Tego! I feel like you're not even Why? Rat this out! You can't stop us. Not quite. Place no! Fringo! I will make you pay. Huh? Easily diverted. Tego! Oh, that was meant for me? I've been fighting since before you were born. I won't rest until you're dead. I don't have time for this. Tego! Didn't have to end this way. अरे यार रुक जा। अबे अबे भाई, इसने तो हील भी नहीं करने दिया मुझे। इसने मुझे हील भी नहीं करने दिया।
हेलो जिंक्स, कैसे हो? बढ़िया एकदम. नाइट किंग कैसे हो? As if there's more than one way to enter. अबे इसने मुझे हील भी नहीं करने दिया भाई. No offense. How many of you are there? पता है क्या हो रहा है? मैं बता दूं. I won't rest. मैंने यार ये जो मोटी कीज लगा दी है ना WASD से, तो मेरा ना हाथ नहीं जा रहा क्यों पे. Miserable. Was that your best? What an unfortunate end. Is that the best you can do? That was pitiful. This is sad. Really, it is. When are you going to give up? What an unfortunate disappointment. Are you quite finished? That's not impressive. An utterly pitiful. That was quite something. Now, Freon's carts. कैसे फ्री करनी है? Revelio. Quite an enchantment. The carts are returning to on. मुझे कल ही ये कीज ठीक करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? नहीं तो बीट गया भाई. एक एक करके कैसे? ओ विंगारियम लेवियोसा है तो. विंगारियम लेवियोसा नहीं सीखी ना. अरे यार उठा के रख सकते थे फिर. काफी चीजें जो सीखी नहीं अभी. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading.
Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. कुछ दिया नहीं यार इसने प्राइस तो All देता the है यार best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. यार तू भी 500 का ही दे रहा है भाई सिल्वर एरो ब्रूम तेरे पास है बता भाई सस्ता लगा दे भाई More than happy to purchase that. Good to have stock, I always say. There we are then. That'll do nicely, I'm sure. Seems a pleasant enough little place. मेरे यहाँ बारिश की वजह से बार-बार लाइट जा रही है क्या बात है मुझे पैसे चाहिए भाई पैसे के बिना ना कुछ खरीद सकते ना कुछ कर सकते हैं
how I love a good... Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Oh, yes, indeed. Talking to myself. Madam... काम बता चल काम बता काम बता पैसे लूंगी मैं I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. There's no telling what lies in wait for me in there. This looks like the statue Madam Twiddle mentioned. Why are there so many? I suppose I could try to find all the vases. Revelio. I think there should only be a few more vases. Revelio. I'm nearly finished. Only one more vase. That's it. I should tell Madam Twiddle about what happened. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. बारिश है भी नहीं उतनी तेज पता नहीं क्या पता बाद में हो जाए क्या भरोसा Revelio. Handy resource indeed, your field guide. She put a bow on my... Obviously, the best greenhouse is the one with the dangerous plants. I can't believe that.
another. Yes, another inflating top. How many times do I have? मुझे ना पहले एक बार यहाँ जाना है जो सीड भेजता है वो सीड कौन भेजता है ये भेजता है ना इससे देखते मैंड्रेक है इस पे कि नहीं है क्या सीन है भाई मैंड्रेक तो चाहिए Revelio. Well, come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Hello. Get up. No one can say I don't keep a stacked shelf. पाँच नंबर से किसी ने कॉल किया वही तो 5 नंबर में से किसी ने कॉल किया भाई नहीं तो भाई कोई कॉल भी नहीं करता है क्या खड़े एटलीस्ट किसी का काट तो नहीं रही हूँ जैसे मेरा कटा था ओहो So nice of you to stop by. भाई दर्द जिंदगी में दर्द है अबे वो गॉबलिन्स कहाँ गया वो गॉबलिन उसके पास है मैंड्रेक अबे यार बरोबर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया गुस्सा कर ओल तुम्हें देख के मेरे को गुस्सा आता है बस मैं बता रही हूँ तुम ही गुस्सा दिलाते हो मुझे Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? बे मैंड्रेक नहीं है क्या किसी के पास भी मरमुरा गए सारे जिसके पास था वो कहाँ है भाई यार क्या क्या करना पड़ रहा है यार
कुछ तो बिकता है यहाँ पे, देखो जरा क्या बिकता है। देखो कुछ ही लोग खास होते हैं, कॉल करते हैं, वरना तो बस कुछ नाम के लिए ही होते हैं। देखो मेरे पे जो कांटेक्ट है उसमें से एक नाम के लिए ही है, नाम की दोस्ती। और दो कांटेक्ट तो दोस्ती है बढ़िया, एक नाम की दोस्ती और एक मम्मी का है और एक बाप। और वो कांटेक्ट क्या ही बताऊं। No, I swear I won't be wasting your time, and I'm grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? जो नाम की दोस्ती होते हैं उसको मैं वो नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे साइड से नाम की दोस्ती नहीं थी इसीलिए, बट अब वो नाम की दोस्ती हो चुकी है। Hello, do you have anything for sale? That I do, but आप what's a इतने student गुस्से like वाले क्यों? yourself doing out here? Got yourself क्योंकि lost, मैं did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. मैं भगवान हूँ इसीलिए। Nice to break the routine now and then. Bit of a तुम wanderer खुश healthy हो, myself, that's in more fact. than enough। healthy My रहना name's पड़ता है। Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself... ज्ञान मत दे, What is- चल ज्ञान मत दे, क्या है तेरे पे बता। What do you have for sale? ज्ञान दे रहे इतना, ये नहीं बता रहा है क्या है। हाँ है तेरे पे कुछ काम का है। Thank you for your patronage. थप्पड़ मार दूंगी, ज्ञान देते जा रहे। ओ 5,000 का ये रखा हुआ है तूने ब्रूम स्ट्रेक, 5,000 का किसी काम का भी है ये? That's been a pleasure. पूछा किसी ने? तुम्हें कौन बता रहा है? तुम हो कौन? तुम्हें बता कौन रहा है? तुम बच कैसे रहे हो? तुम्हें पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता कौन रहा है? गुस्सा मत दिलाओ मुझे, कुछ चाहते हो करते हो नहीं, बस मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। हाँ नहीं तो एक तो इसका थप्पड़ नहीं, भाई थप्पड़ मार दूंगी। हाँ बहुत जोर की, जिम जाने के बाद मेरे को लगता है मेरे थप्पड़ जोर से लगेगा। मेरे हाथों में नाखून भी है, ठीक है। ओए 500 का डब्बा दिख गया भाई मुझे। भाई मेरे को 500 का डब्बा दिख गया है। ले भाई यहाँ तो उड़ ही नहीं सकते, क्यों भाई? कीड़े हैं क्या यहाँ जो उड़ने नहीं देंगे? लियो 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 भाई, 500 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, मिलते ही नहीं है। Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. ना 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 ना। नहीं प्रगल्भ जी, मैं ना चुप रह लो, मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। आने दो, वैसी मेरी तबीयत खराब है। दवाई तो दे नहीं सकते हो तुम, दवाई दो, जाओ दवाई लेके आओ मेरी। काम धंधा कुछ करते नहीं है। हाँ गुस्सा दिलाते रहते हैं।
मल्टीपल एनिमीज लाओ इनके लिए अब। मल्टीपल एनिमीज, मकड़ियाँ हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं डरना है मकड़ियों से, मुझे मकड़ियाँ नहीं पसंद। प्रकल्प जी की तरह है मकड़ियाँ, ये लो। इससे ठीक नहीं होगा। वो लाओ कोरेक्स कफ सिरप, शायद उससे ठीक हो जाए। ओ हाँ बे, मुझे कफ सिरप लेना था यार। ज्यादा हो रहा है मेरे को खांसी अभी, पता नहीं क्यों एकदम से। What's that? You made a mistake coming here. Where did you go, coward? You're the one who released Treadwell, aren't you? The finals all finished. Cast that screaming I'll rip your brain out. See how you like it. बाय। मैं तो बस कान फोड़ने आई थी इनके। मैं तो चली कान फोड़ के। आपसे बात करूं? अरे यार बहुत खांसी हो रही है, मैं क्या करूं बताओ, जा ही नहीं रही है ये। लगता है दवाई मंगानी पड़ेगी। देखिए ये नहीं हुआ ना तो मैं 120 इनके सर पे मार के आऊंगी। तो गुस्सा कम किया करो ना, कितने बार बोला है। और यार उससे कहाँ ठीक होगी। बैठ गया, गला बैठ गया। ले भाई भाई 160 का दे रहे हैं। अबे भाई दवाई है ना, पता नहीं क्या है, डॉक्टर को दिखाओ। अरे डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी थी, खत्म हो गई भाई। 105 की दवाई मंगा रही हूँ, ठीक है, और 146 की आ रही है। व्हाट द फक भाई, ठगना भी इनसे कोई कैसे ही। कितना ठगेंगे भाई। चले जाए, रेस्ट करे और सो जाए चटके। अबे कौन, मैं घंटा रेस्ट नहीं करूंगी, मैं ऑफलाइन खेलूंगी, तुम मुझे भगाओगे। तो जाके ले आओ ना। अबे कहाँ जाए यार, हिम्मत ही नहीं है भाई इतना। चुपचाप से ले ले। अभी डॉक्टर कॉल करेगा। ले हेलो, यस मैम। For me, I have dry cough. Wonderful to see you again. It's usually too much at night. My age is wait, ma'am.
ओ ले भाई, अभी मेरी एज, मेरा एड्रेस सब कुछ रिवील हो जाता। उसने पूछा होता है और मैं स्ट्रीम में भूल गई, मैं स्ट्रीम कर रही हूँ। हाय आकाशी, कैसे हो? रिवीलिंग द एरिया हो गया था my गाइस अभी। assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, Wingardium graceful wand movement. Levioso. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Well done! Practice Wingardium Leviosa. You're a natural. वो सब तो ठीक है। अरे मेरी बात सुन, वो क्या कहते हैं, टैलेंट में जाके जो टैलेंट पॉइंट होते हैं हमारे, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेल्स, हाँ ये स्पेल्स खोलनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ओके हमें ना स्पेस के लिए कौन सा था यार, मेरे को एक ने बताया था स्पेस के लिए। पता है स्पेस के लिए कौन सा होता है? तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो, बताते भी नहीं हो। बेवकूफ, सबसे बड़े बेवकूफ तो ये हैं, क्या कहते हैं, प्रकल्प जी। Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you want to teach? तो फालतू बकवास करे ना, नहीं सुनना। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने नहीं आती हूँ मैं, ठीक है? हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ जाना है हमको, ठीक है? Revelio. डब्बा का है नीचे होगा कहीं। मुझे लगता है हमें उस बुड्ढे के पास जाना ही पड़ेगा भाई। बुड्ढे के पास जाके एक बार बुड्ढे के पास जाके मर्लिन ट्रायल्स करना पड़ेगा पहला। पहले के बाद आएगा दूसरा, दूसरे के बाद आएगा तीसरा, तीसरे के बाद आएगा चौथा, मेन फाइनल बॉस।
तो अगर हमें वो चाहिए तो हमको वो चाहिए, तो हमको वो चाहिए तो वो चाहिए। तो वो होगा तो वो होगा। वो है इसका, कहाँ है इसकी चाबी कहाँ है? क्या इसकी चाबी कहाँ हो सकती है? या तो ड्रैगन के पास चाबी हो जाए। Wingardium Leviosa. Leviosa. कहाँ गई? हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, मम्मी को भेज रही हूँ। आ गई भाई, दवाई भी आ गई और मैं भी आ गई। ये ऐसी है ना, बस आराम तो आ जाएगा। Revelio. That's it. Revelio. Leviosa. ये कौन सा पोशन था? मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाते हैं। खूब सारे खूब सारे वो बनाने पड़ेंगे। वो ले भाई, इसके लिए हमारे पास वो नहीं है हॉर्क्लम। यार सब कुछ ऐसा लगता है भाई। बिना पैसे के कुछ होता ही नहीं है गेम में भी। I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course.
What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. इसके पास जाएंगे, ठीक है? इसका काम कर। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती? How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. कितना सुंदर है, देख रहे हो कितना सुंदर है? ना सुंदर ना ना। It's me, Gareth. Were you calling me Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. The one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Yes! पहले तो मैं ये अनलॉक कर लूं। अब बताओ क्या ढूंढना है? स्टैच्यू ढूंढना है। The path you walk is ये तो रहा। This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Broken? रिपेयर कहाँ है भाई? Repair it. आगे वापस yes. That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me.
एक मिनट मैं तो कहता हूँ फ्री फायर स्ट्रीम हो जाए एक। क्या बात कर रहे हो? मौत आ जाए इससे अच्छी। फ्री फायर खेलूं मैं? कैसी बात करते हो यार तुम? कैसी बात करते हो? फ्री फायर कौन खेलता है? I'm trapped. How am I supposed to get out of here? तुम्हें पबजी देखना है सीधे बताओ। Wingardium Leviosa. तुम्हें वेलो देखना है? If I could lift this platform, I think I could get it to work. चल सकते हैं यार वेलो। लगाती हूँ वेलो। I'm इसके बाद going to have to get past this. बे भाई क्या सीन है? मैं तो यही करती रहूंगी, रिपेयर ये वो सो। ले भाई रिपेयर हो। हाँ वेलो तो देखना है, क्या बात है। सोच लो, बोर हो जाओगे। One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. चुतिया पे कराते हैं ना, मुझे यही पसंद नहीं आते फिर। अब इसमें से कौन सी वाली है जो इनको चाहिए? That did the trick. वेलो तो देखना है, कुछ भी खेल लो। फ्री फायर से बढ़िया कोई गेम भाई, जो खेलता नहीं है ना वो ऐसे ही बोलता है, ठीक है? हाँ I need to find a way to... मुझे सब पता है तुम्हारा। खेलते तुम हो नहीं। मुझे परेशान कर रहे हो। Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. वो मेरे को ये डब्बा में चाहिए था। अब यहाँ से ऊपर कैसे जाऊंगी मैं? अच्छा तुम्हें ये हैरी पॉटर पसंद नहीं आ रहा ना? सही बताओ। नॉट अ हैरी पॉटर फैन मिस्टर पॉटर।
Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. पैसे लूंगी मैं इससे, फ्री में थोड़ी दूंगी। कैंडी खाओगे पोल्टर? कैंडी। हेलो रोहित जी। तुम्हारे लिए स्पेशल ब्लू। Revelio. कुछ तो हुआ इसको खा के, हवा में उड़ गई मैं। माय गॉड कपकेक। और क्या है? अबे लॉक लगे ना। टूर्नामेंट खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, देखने में नहीं आता है। पॉइंट है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। फ्री फायर बेस्ट। अरे रोहित जी, आप तो फ्री फायर वाले ही हो, मुझे पता ही था। इतनी बुरी नौबत नहीं आई है यार गाइस कि हम फ्री फायर खेलने लग जाएं। चिंता मत करो। इतनी भी स्किल्स नहीं गिरी मेरी। खेल सकते हैं भाई वे लोग, खेल सकते हैं वे लोग। आता है आता है। वो अलग बात है कि अब इमॉर्टल वाली बात नहीं रही, अब डायमंड वाली बात है बस। कभी डायमंड है, कभी कुछ है, कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। कभी कभी ब्रॉन्ज भी बन जाती हूँ मैं, ऐसे चेंज होता रहता है मेरा। Hello, Gareth. मेरी रैंक चेंज होती रहती है हर गेम में, हर मैच में, सॉरी। Incredible. और हर राउंड में। Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Of course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. पैसे दे पैसे, चल पैसे निकाल, पैसे दे, पैसे दे जाकर। बे और 300 दिए यार इसने, इतना झमेला करने के बाद इसने मेरे को 300 दिए। भाई इससे अच्छा तो करती ही नहीं मैं, इसका कोई काम नहीं करना है आज के बाद। काम वाली बाई समझ रखा है इसने तो मुझे। देख रहे हो तुम कैसे काम करा रहा है, बिना वैसे दिए काम करा रहा है। बेवकूफ कहीं का। क्या हो गया?
Bro, I tried Apex, बहुत fast paced game है. Apex बात मत करो. Apex क्या होता है? छोड़ दी वो छोड़ दी भाई. उसके बारे में बात ही नहीं करते. सुनना ही नहीं वैंग करे Apex. क्या होता है Apex? हाँ? मैं नहीं जानती. खोलो दरवाजा खोलो. हमें खरीदने हैं. कुछ तो खरीदना है हमें. खरीद के ना एकदम कंगाल कर दिया है भाई. 1 रुपए नहीं है जेब में. यहाँ जाएंगे हम. एपेक्स के नशे हो जाते हैं. प्लीज एपेक्स की बात मत करो. मेरे को चिढ़ होती है एपेक्स. एपेक्स चल जुट्टी चुप. Don't thank you enough. Wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories पिछली about बार it, मुझे ये and लड़की I've लड़का had मिली an थी. irrationally इस बार intense लड़की fear लड़की of it मिली ever है. since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. चल ठीक है जाने दो. जाते जाते भी बकवास करे. आराम से बोलो. काम नहीं अच्छा लगता है, वरना तो जोर से ही बोलते हो. अरे माइक पास था बता दिया करो. दूर कर दूंगी. मेरे माइक ना मुंह के पास होता है तब तेज आवाज आती है. That's her choice. अबे हर चॉइस नहीं है. माइक मेरे मुंह पे होता है. वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तेज आवाज आ रही है. माइक दूर करो. Huh? There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. कहाँ गई वो? मैं क्या बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे हो तुम. पागल हो तुम. Oh well, look what we have here. भाग ली तुम्हें देख के. हाँ और कुछ. पागल हो तुम. पागल.
Revelio. Leviosa. ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब नहीं आ रहा है यार। अरे उसमें देख लो क्या था वो, एनिमिक्स। एनिमिक्स में हो सकता है। तुम्हें हिंदी में क्यों देखना है? हिंदी में कौन देखता है? तो खुद करती है पागल। में पागल हो तुम, पागल। Still talk about. Please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. नहीं वो सब ठीक है, मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसा दो भाई। पैसा नहीं दे रहे यार, पैसे दे। मैं हिंदी में ही देखता हूँ, मैं सब पर डिपेंड नहीं कर हो सकता, समझ नहीं आता। सही बात है, बट यार हिंदी फिर भी सोचो, अगर कोई हिंदी का आर्टिस्ट जो है वो अच्छा नहीं है तो बहुत ही गंदा दिखेगा। मतलब दिखेगा नहीं, मतलब सुनेगा। पहले हम जाके देखते हैं पौधे वाला किधर है। रोहित भाई इंडिया में डबिंग सीन बहुत कर। एग्जैक्टली हिंदी डब कैसा होगा? हिंदी डब मजा नहीं आता होगा यार, वो भारीपन होगा आवाज में। Hello, be with you in a bit. और हिंदी बोलते हैं वो कैसे होता है? तू क्या कर ले रही है भाई, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? क्या पता। तेरे पे तो कुछ नहीं है भाई। No one तू can तो say I बेकार don't है। keep a stacked shelf. पानी गटक लो। ट्रांसलेशन बहुत गलत करते हैं, कई जगह चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है, बड़ा ही अजीब लगता होगा। ऐसा तो वो लोग बोलते हैं। नहीं नहीं, हिंदी डब में भाई कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या पता। ओ भाई क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे ये गुंडे टाइप, मतलब एकदम छपरी टाइप बोलते होंगे। कैसे ही बोलते होंगे यार हिंदी में।
Revelio. Revelio. कुछ कुछ का मैंने भी देखा था हिंदी में, मतलब एनीमे तो कभी नहीं देखा, बट जैसे मूवी वगैरह तो ठीक ही लगता है, मतलब इतना कुछ खास नहीं लगता है। उनकी टोन वगैरह से इमोशंस चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली भाई, अजीब ही लगता होगा भाई, कैसा लगता होगा, अजीब ही लगता होगा। लगता है मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार, कैसे बोलते हो हिंदी में। मत बोलो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिर आएगी खांसी सिर्फ। सारा बनाने लगे, पोषण लगे, बस चाहिए ना हमको ये मर्लिन वाला करने के लिए, हमको चाहिए पोषण चाहिए भाई, दारू चाहिए भाई, बिना दारू के नहीं होता है, दारू ही हील करती है हमको। वो हरी हरी दारू है, जब वो गले से उतरती है फिर ठीक हो जाता है सब। We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. देखो अंकल, मेरे को ये दे दो 5। Wise decision. Thank you. ठीक है, और ये 3 दे दो मेरे को। सस्ता तो आप लगा नहीं रहे। महंगे एकदम लुट्टू हो आप, पता है, लुट्टू। I hope to see you again. लूट रहे हो। Farewell for now. ऐसा कर चाहिए तो फ्री की दारू कभी नहीं मिलती भाई। अब मुझे भी हिंदी डब सीन ठीक करना पड़े। क्यों, तुम्हारी आवाज अच्छी है, भारी सी आवाज है तुम्हारी। क्या तुम भी मग्गे वाले हो, मग्गे वाले।
मग्गे वाले जो ऐसी आवाज निकालते हैं, भारी आवाज। नहीं ऐसे तो नहीं यार, मैं लड़की ऑब्वियसली मैं वैसे नहीं कर सकती। डीप वॉइस, हाँ बट वो डीप नहीं होती है यार, वो बहुत गंदी लगती है। डीप वॉइस तो अलग ही होती है। डीप वॉइस का तो नशा होता है ना। वो मग्गे वाली आवाज सुन के ऐसा था कि भाई चुप हो जा प्लीज, नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज बंद कर दे। नहीं यार ये अच्छा ही नहीं है, मैं क्यों लगाऊं, कुछ अच्छा होना चाहिए। वो ये थोड़ा ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? इस दीवार पे क्यों नहीं लग रहा है? तो लग रहा है, लगाना आना चाहिए, लग तो सब जाएगा। अच्छा मेरे पे ऑलरेडी बना रखा है। डीप वॉइस के नशे हो रहे हैं आजकल। हाँ नशे हो जाते हैं, नशे। मुझे होते हैं डीप वॉइस के नशे। ठीक से एम करो पास से। हाँ ठीक है। भाई परफ्यूम के भी नशे होते हैं भाई मुझे। हाँ वो कैसे भूल सकती हूँ। परफ्यूम मेरा फेवरेट। परफ्यूम चाहिए होता है मुझे। ऐसा कोई परफ्यूम नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं किया। सारे जितने भी है, अब तो नाम भी नहीं पता मेरे को, इतने इतने ट्राई कर लिए। बहुत शौक है मुझे, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, पागल हूँ मैं परफ्यूम के पीछे। यार हम कर क्या रहे थे मुझे अब याद ही नहीं आ रहा। ले ओह हार्वेस्ट फ्लक्सवीड, ठीक है। यार ये गलत है यार, इतना तो पैसा इसी में जा रहा है भाई। फ्लक्सवीड कहाँ से लाऊं मैं? बहुत महंगा कॉलेज है भाई ये स्कूल भाई, बहुत महंगा है भाई। ये तो हमारे कॉलेज से भी महंगा है भाई। बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। इतना तो हमारे कॉलेज वाले नहीं मांगते। एक आध कोल्ड ड्रिंक तो दे ही देते, वो पानी तो दे ही देते हैं फ्री का। ये तो पानी भी नहीं दे रहे फ्री का। कर दूंगी इसका लेवियोसो। What are you up to now? कौन बोला? कौन बोला? तू बोली? थप्पड़ खाएगी थप्पड़।
ठीक है, चुप रह ले, चुप। ले भाई, पहले ही लूट लिया हमने तो इसको। इसको क्या ढूंढ रहे हम? छी भाई, पानी गिर गया मुंह पे, वो भी गंदा। नहा ली वो भी, वही तो भाई, छी, पॉटी से नहा ली हूँ मैं। कोई नहाया होगा जिंदगी में पॉटी से, वो भी। Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. चैंप है, चैंप है, चैंप है। थप्पड़ खाएगा तू भी, ठीक है? Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. चुप चुप। Revelio. इतनी जा रही थी भाई, मजा आ रहा था भाई, Now a teacher herself. बहुत मजा आ रहा था मुझे फ्लश करने में। इतना मजा तो मेरे को जिंदगी में कभी नहीं आया। ये क्या है हरी हरी? Not someone else trying to pass through. If you step in the wrong place and become engulfed in a stench, well, be it on your own head. It is not my doing. हैरी पॉटर का रीमेक आ रहा है यार, छी, मजा नहीं आएगा। वो मजा कहाँ है जो असली वाले में है? बताओ, वैसा मजा दे सकते हैं कोई? ओजी तो ओजी होता है ना। Revelio. भाई कहीं तो आ गए हम तगड़ी जगह, कहीं तो आ गए हम, कुछ तो कर रहे हैं। भटक रहे हैं हम, पता है, भटक। हम पे कितने 13 पोर्शंस हो गए ना, हम जा सकते हैं अभी। अब हम जा सकते हैं यहाँ भाई। कहाँ इतनी दूर भाई? एग्रीड, वही यार, मैं तो नहीं देखूंगी रीमेक वीमेक, वो बात ही नहीं है। वो बंदा देखा ना मैंने जिसको हैरी पॉटर बना रखा है, बस मन भर गया उतने में ही। प्रोफेसर स्नेप देखा भाई, प्लीज मत करो। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो, उसकी माँ बहन कर दी, पता नहीं क्या बना दिया उसे। ऐसा लग रहा है सारे मीशो से आ गए हैं। Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No
idea who this supplier is, mind you. सारे मीशो पे बिक रहे थे और सबको उठा के रख लिया फर्स्ट कॉपी। ये फ्रोजन वाला तो बहुत जरूरी है भाई, ये किसी काम का नहीं है। तो इसके बदले हम ये ले लेते हैं। They did him dirty भाई। ये मीशो कहाँ से आ गया भाई? मीशो वाले ही हैं भाई वो, बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। अटक गए, अटक नहीं गई। देख रही हूँ एंकर क्या क्या चाहिए। अलोहा मोरा चाहिए हमें, अलोहा मोरा, तब जाके ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, सब बता दिया मैंने तुम्हें। चलो अब कल ही खेलते हैं, मेरी तबीयत से खराब हो रही है। इससे पहले कि मैं खास खास के तुम्हारे कान फोड़ दूं, मैं चली। बाय, कल वेलो खेलेंगे ठीक है।